लेक्चर में हम बात करेंगे A2 की कंप्लीट डेफिनेशन जो पेपर में आई हुई हैं वो A2 के सारे मैथमेटिकल फार्मूलाज और सारे ग्राफ्स की बात करेंगे। हम्म। तो बेटा लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज रेडियन। रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है बेटा। व्हाट इज ग्रेविटेशन फील्ड हाँ जी। स्ट्रेंथ? ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ इज ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट mass. यू नो G इज F/m। सो इस फॉर्मूले से इसको डिफाइन कर लेंगे। व्हाट्स ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट ए पॉइंट? वर्क डन। ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव चार्ज। you know E is F/q. Electric potential at a point. Work done to bring a unit positive charge. Clear? हाँ जी। Simple harmonic motion. The motion, the periodic motion directly proportional to displacement from fixed point या mean point and directed towards that fixed point. तो आप रिकॉर्डिंग मुझे भेज देना। Okay, what's capacitance? You know capacitance is C is Q by V। क्यों ऊपर हुई? यहाँ से डिफाइन करेंगे रेशियो ऑफ चार्ज ऑन one plate of capacitor and potential difference across the capacitor। बस ये आपको ये चीज़ याद होगी ना इक्वेशन, तो फिर आपके लिए मसला नहीं है। व्हाट इज फेरेड? फेरेड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो जब हम यूनिट की बात करनी है तो फिर हमने करना है कि फेरेड इज कूलम पर वोल्ट। फेरेड इज कूलम पर वोल्ट। ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप यूनिट को डिफाइन करेंगे तो यूनिट्स के हिसाब से चार्ज की यूनिट को कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। दिस इज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट same heating effect is alternating current gives। पता भी है ना इस फार्मूले का कि आरएमएस की बेसिकली वैल्यू, जो आरएमएस होता है वो डायरेक्ट करंट की वो वैल्यू होती है जो वही हीटिंग इफेक्ट देती है जो आपके पास एसी देता है। व्हाट इज टेस्ला?
Tesla is unit of magnetic flux density, and you know that F is equal to BIL sine theta. So if I make subject B, I will get F over IL sine theta. So if I put theta 90, then I will get F by IL. So Tesla is unit of B, that is Newton per ampere per मीटर। ओके बेटा, ये पास पेपर में आई हुई है, Yes. या आप ये लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, या न्यूटन एम्पेयर -1 m-1। What is magnetic flux density? So defining B, that is F by IL sine of 90. So force per unit length per unit current on a wire placed perpendicular to magnetic field. Why perpendicular? Because sine of theta की जगह sine of 90 कर दिया, it's 1. Is that clear? Yes, sir. Magnetic field. What's magnetic flux? Flux का formula you remember, BA sine theta होता है, where B is magnetic flux density, A is area, and theta is the angle between magnetic flux density and the area. So sine of 90 अगर कर दें तो it's 1. So हम कहेंगे product of what? Magnetic flux density And area. and area held perpendicular. ये लफ्ज़ कहना ज़रूरी है बेटा। इसकी क्या वजह है कि जब आपने साइन 90 कर दिया तो फिर सिर्फ ये बन जाएगा B इंटू ए। व्हाट इज फोटॉन? Quanta of energy. हाँ, डिस्क्रीट पैकेट और स्लैश क्वांटम of energy of electromagnetic radiations. What is work function? It's work function. Minimum energy. It is minimum energy ordered for photons to release from the metal surface. Minimum energy of photon Emission from the metal surface. required to emit electron from metal surface. Threshold frequency, minimum frequency EM radiation What is de Broglie wavelength? De Broglie wavelength? सर ये वाकई नहीं पता है। डी ब्रॉय वेवलेंथ
और स्पीड क्या था? बस मैं बताता हूँ, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद a material particle that has momentum. Lambda is h over p. Binding energy of a nucleus. Energy required to separate nucleons या constituents of nucleus to infinity. What is radioactive half-life? Time during which number of nuclei decay to half of initial value. What is decay constant? Probability of decay of a nucleus per unit time. What's activity? Rate of decay of an unstable nuclei. स्टेट, अच्छा अब डेफिनेशन सारी जो पास पेपर में आई है वो हमने लिख दी है, और ये वो जो किसी न किसी पेपर में पूछी गई है। अब हम लॉस की बात करेंगे कि स्टेट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स बिटवीन, ग्रेविटेशनल भी कह सकते हैं या फोर्स बिटवीन टू पॉइंट masses is proportional to product of their masses and square of distance between them. फॉर्मूला याद है इसका? इसका? न्यूटन लॉ हाँ ऑफ जी, एफ इज ग्रेविटेशन, इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। gm1 m2 over r square. बिल्कुल। What's Coulomb law? और जी फोर्स एफ इज, बिटवीन, अब मैं डिफाइन करवा रहा हूँ इसको, फोर्स बिटवीन टू, सर वो के क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना? जी जी, पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of charges, inversely proportional to square of distance between them. तो फॉर्मूला क्या होता था? F is equal to 1/4 pi epsilon Q1 Q2 over R square. Is that clear? यस। So now state Faraday law of electromagnetic induction. Induced EMF
is directly proportional to rate of change of magnetic flux linkage. State Lenz's law, direction of induced EMF is such that it opposes the cause that produces it. याद है ना? हाँ जी. Explain what is meant by damping. Decrease In amplitude gradually amplitude due to a resistive force. of oscillating body due to external resistive forces. Resonance, when frequency of external force is equal to the natural frequency, its amplitude becomes maximum. This phenomenon is known as resonance. Okay? Yes. That what is meant by radioactive decay? Random and spontaneous decay, random and spontaneous emission of particles mean alpha beta, and radiations. सर आप ये मुझे शीट भेज सकते हैं इसके बाद? Yes, beta, भेजूंगा. Random and spontaneous emission of particles and radiations from an unstable nuclei. That what is meant by an ideal gas? The gas which obeys or satisfy PV is equal to nRT for all values of pressure, temperature, and volume. State what is meant by an internal energy of a substance. Sum of random distributions of kinetic energy and potential energy of some random distributions of kinetic energy and potential energy of all the molecules of substance. Write down the formula and explain the symbols you use. अच्छा जी, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा
F is equal to mv square over r, where m is mass, v speed, and r radius. या दूसरा फार्मूला होता है F इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर. Newton's law of gravitation, F is equal to G m1 m2 over r square, where m1 the mass of one object and m2 be mass of another object, r is the distance between them. Okay, Yes, sir. G is gravitational constant. Gravitational potential at distance due to mass, this is phi is minus g m over r. M is the mass of ये तो that दिया होता. object, r is the distance, and g is constant. Gravitational potential energy between two masses, EP is minus g m1 m2 over r, where m1 m2 are their masses and r their separation. Coulomb's law, F is equal to 1 over 4 pi epsilon naught q1 q2 over r square. q1 q2 are the charges, r there is the distance between them, and epsilon naught is the permittivity of free space. Electric potential energy of two charges, that is 1 over 4 pi epsilon naught q1 q2 over r, that is EP, where q1 q2 are the charges, r is the distance, and epsilon naught is permittivity of free space. Gravitational field strength at a distance from a mass, that is g m over r square, where m is the mass जिससे हम ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ देखना चाह रहे हैं. r is there, r is the distance of point, distance from center of m. Displacement and acceleration relation in simple harmonic motion is minus omega square x. X is displacement from the mean position, and A acceleration. Omega is angular frequency. In case of oscillating body, omega is 2 pi by t, where t is time period. Total energy of mass in simple harmonic motion, E total is 1 by 2 m omega square x naught square. So where x naught is amplitude, this is angular frequency, or you can write omega is 2 pi by t, m is mass. Maximum velocity in simple harmonic in terms of angular frequency and amplitude, v is x naught omega, where you know omega and x naught. X naught is amplitude, omega is angular frequency. Relation of capacitance, charge, and voltage, Q is equal to CV. This is charge. You know that? This is Yes. voltage, sorry, potential difference. And that C is capacitance. Energy stored in a capacitor, 1 by 2 QV. Q is the charge on one plate, or V is potential difference. Yeah, you can write E is Q is equal to CV ना, so Q की जगह CV डालें तो half CV square
या थर्ड वन इज, और v की जगह q बाई c डाल दें, q इज इक्वल टू सी वी, सो v इज q बाई c, so that would be half q square by c. General expression of alternating sinusoidal voltage, that is v equal to v naught sine of omega t. This is maximum voltage, amplitude, peak voltage. This is voltage at any time, that is omega is angular frequency, and t is time. Yeah, you can write v is equal to v naught sine of. So force on current carrying wire inside magnetic field, the formula is F is equal to BIL sine of theta. This is magnetic flux density. I is current and L is length of wire inside magnetic field. And theta is angle between wire and magnetic field. F is force. Force on moving charge inside magnetic force, inside magnetic field, that is Q VB sine of theta, where Q is charge, V is its velocity of the charge, and B is magnetic flux density. Okay, Yes. magnetic flux density, and theta is angle between velocity and magnetic field strength. All voltage is BI over NTQ, where B is magnetic flux density, you already know, I is current, and N is number of free electrons per unit volume. ये चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं इसको, ठीक है? Yes. And T is thickness of the slice. The Broglie relationship, lambda is equal to H over P. P is momentum of material particle. This lambda is wavelength. H is Planck's constant. Now comes graph. Sketch the graph of gravitational field strength with distance r. You know G is Gm by r square. So graph would look like ये जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हुए G बाहर इस तरह होगा, और इनसाइड इनसाइड G जो है वो आपके पास जो होता है वो हमारे सिलेबस में नहीं, हम पॉइंट में ऐसे लेते हैं, लेकिन इनसाइड जो है वो लीनियर होता है, ठीक है? Sketch the graph of Yes. gravitation potential with R. Phi is minus G m by R, so that is negative. यहाँ से पता चल रहा है, so ये इस तरह होगा। स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ सबसे ज़्यादा नेगेटिव, और आगे जाते जाएंगे तो कम नेगेटिव वाले। ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन टू मैसेज के बीच में एक पॉइंट आएगा जहाँ पे जीरो होगा। नेट ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की हम बात करना चाह रहे हैं, उसकी प्लॉटिंग तो इस तरह होगा।
इफ दे आर इक्वल मैसेज तो ये सेंटर में होगा, और अगर इक्वल नहीं है तो ये शिफ्टेड होगा। और ग्रेविटेशन पोटेंशियल बिटवीन टू मैसेज m2 और m1 अगर इक्वल होंगे तो ये आपने बनाना है इस तरह। और अगर m m1 स्मॉलर होगा m2 से तो फिर जो है या यहाँ से इधर से शुरू होगा, फिर ये कुछ इस तरह होगा। ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is 1/4 pi epsilon naught q over r। तो these two charges are positive, तो इसकी वजह से भी पॉजिटिव होगा ऊपर और इसकी वजह से भी पॉजिटिव। तो इस सूरत में the net graph of the potential would look like this if they have same magnitude of the charge। और if ये एक चार्ज नेगेटिव है, ये दूसरा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल जो है वो आपके पास और इन साइड बेटा पोटेंशियल जो है, अगर उसने कहा हो कि अब बिटवीन टू चार्जेस का है तो इसलिए हम इन साइड की बात नहीं कर रहे, अदरवाइज इन साइड जो है ये कांस्टेंट होता है, एग्जाम के लिहाज से मैं बात करूं। और अगर बेटा आपके पास ये एक चार्ज नेगेटिव है, इसकी वजह से पोटेंशियल जो है वो दैट इज नेगेटिव, और इसकी वजह से पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है, तो रिजल्टेंट वुड बी, हमने ऑलरेडी बात की हुई है इन चीज़ों पे डिटेल में। रिजल्टेंट जो है यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह होगा। दिस इज द रिजल्टेंट पोटेंशियल। So sketch the graph of acceleration with displacement in simple harmonic motion. You know that this is uh, the relationship between acceleration and displacement is this. So it's a straight line passing through origin with negative gradient, and this is minus x naught, that is positive x naught, and the gradient is minus omega square. Okay. Sketch the graph of velocity with displacement in Yes. simple harmonic motion. So you have this formula plus minus omega x naught square minus x square. Velocity is maximum at 0 and it will have two values, and the velocity is 0 at x naught and it has also 0 at positive x naught and negative x naught. So you will sketch this type of graph. The values यहाँ पे क्या होगी, प्लस ओमेगा एक्स नॉट, यहाँ पे होगी माइनस ओमेगा एक्स नॉट। ठीक है बेटा। स्केच द ग्राफ ऑफ काइनेटिक Yes, एनर्जी sir. पोटेंशियल एनर्जी इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता है, दैट इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन और मिनिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दैट इज जीरो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत हम बात करेंगे, तो दैट इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यू शुड बी एबल टू ड्रॉ देम, और यहाँ पे लेबल करना आना चाहिए कि दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट वन इज काइनेटिक एनर्जी। और बेटा अगर टोटल एनर्जी की बात एग्जामिनर कर लेता आपसे, तो फिर यू शुड बी एबल टू ड्रॉ द टोटल एनर्जी, एंड टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज नॉट चेंजिंग, दिस इज टोटल। Yes, sir. कितना रहता है? अभी थोड़ा सा रह गया, दिस इज टोटल एनर्जी। So sketch the graph of charge with time during discharging of the capacitor. You know Q is equal to Q naught e power minus t divided by RC. So एक्सपोनेंशियल डीके होगा बेटा, और यहाँ इसके पैरेलल आपने शो करना है, यहाँ टच नहीं कराना।
Sketch the graph of maximum kinetic energy of photons with frequency in photoelectric effect. You know सर आप photon? एक सेकंड ऊपर जाएंगे? Yes. अच्छा जी, देख के चले, थैंक यू। Energy of photon is phi plus E max. Phi is the work function and E max is the maximum kinetic energy. So E max को अगर आप बेटा सब्जेक्ट बना दें तो that would be HF minus phi. So F और E max का रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रेट लाइन है और आपने इस तरह स्ट्रेट लाइन बना देना है और इसको अगर एक्सट्रापोलेट करेंगे तो दिस विल बी F naught and gradient would be H. You remember that? यस। And sketch the graph of de Broglie wavelength with momentum lambda is equal to H by P. So बेटा जैसे जैसे P इंक्रीज होगा lambda will decrease और ये दोनों एक्सिस को टच नहीं करेगा। When P is zero, lambda is infinite. When P is infinite, lambda is zero. ओके बेटा। सो ये सारा हमने सारे रिलेशनशिप्स की बात कर ली है और जो है हमने मेन मेन सारी इक्वेशंस का आपको बता दिया है एंड सो ऑन बिल्कुल। जो पेपर में आई हुई।